Hello, friends. Welcome back. Welcome to our Bihar series, episode 2. Hope you all are doing well and are following all the activities happening in political arena in Bihar. Today, Nitish ji organized a virtual rally with extremely high hopes. But all of that went in vain. On social media, at least, people have shown that they are not interested in his lies anymore. If there were 700 likes, then there were 10,000 dislikes. खैर उस पर चर्चा दूसरे फोरम्स में जम के हो रही है. Today we have gathered to understand about what should be roadmap for Bihar's development. The Bihar model. What should be the growth roadmap of Bihar? Should it be just promises of jobs, employment for teachers, better schools, roads, hospitals, food for everyone, universities, etc.? Or should there be a coherent plan? Shouldn't we ask for a vision for Bihar? I urge our people, fellow Biharis and our leaders, to think through as to what should be the vision of Bihar. And today in this podcast, in Bihar series, episode 2, we are going to talk exactly about that. दोस्तों, बिहार विजन पे जाने से पहले मैं आपको 3 जगहों की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ. तीनों का जन्म लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1940 के दशक में हुआ. वैसे तो तीनों ही पुरानी ही सभ्यताएं हैं, पर अभी का जो उनका रूप है उसका जन्म 1950 के लगभग आसपास हुआ था. अब तो वो जगह 75 के होने चले हैं. एक अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि बिहार, एक साउथ कोरिया और एक इथियोपिया. मित्रों, तीनों की जो जनसंख्या है वो लगभग इथियोपिया और बिहार की 10 करोड़ है. तीनों का एरिया जो है वो एकदम बराबर है, लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और तीनों ने जब शुरू किया था तो तीनों कुछ भी नहीं थे. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तीनों ही सभ्यताएं एकदम जमीन से रगड़ी हुई थी और जस्ट आजाद हुई थी. तीनों का अपना अपना हजारों साल का इतिहास जरूर है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते इंपीरियलिज्म और गुलामी ने तीनों जगहों को नेस्तो नाबूद सा कर दिया था. तीनों की कोई इकोनॉमी नहीं थी. इथियोपिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, जिसके आसपास सूडान, सोमालिया के बॉर्डर लगे हुए हैं, वहाँ पे सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिस्ट पर्ज होते रहे 1970 और 1980 के दशक में. उनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई. बिहार जितनी जनसंख्या लेते हुए भी वो लोग आज भी पॉवर्टी, भूख, करप्शन, अस्त व्यस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ जूझ रहे हैं, with little or less access to health and education for people. On the other hand, South Korea, जिसकी 1950 में एक लड़ाई भी झेलनी पड़ी. 1953 तक वो नॉर्थ कोरिया से एक लंबी जंग लड़ता रहा. 3 साल के बाद दोनों देश लगभग तबाह हो चुके थे. नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म चल रहा था और साउथ कोरिया ने कैपिटलिज्म को अपनाया था. बट जो कुछ बातें साउथ कोरिया ने की वो ये कि उन्होंने फोकस दिया एजुकेशन पे. उनके वहाँ आज यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कि सेकेंड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है पूरी दुनिया में.
MRI, CT स्कैन, बड़े से बड़े प्रीमियम कटिंग एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज मौजूद हैं। वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की 82 ईयर्स है, जो कि विश्व में 3rd हाईएस्ट है। उन्होंने एक फोकस करके अपने कुछ इंडस्ट्रीज को चुना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स। गवर्नमेंट ने फोकस्ड एक विजन और रोड मैप के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का मॉडल चुना। और आज साउथ कोरिया विश्व की टॉप 12वीं इकॉनमी बना हुआ है, जिसकी जनसंख्या बिहार से भी आधी है। उसकी इकोनॉमी $1.6 ट्रिलियन चल रही है, और बिहार और इथियोपिया की 80 बिलियन। कहाँ 80 बिलियन और कहाँ 1.6 ट्रिलियन। दोस्तों, हमको सोचना है, हमें इथियोपिया का, अफ्रीका का गरीबी, भुखमरी, करप्शन, अस्त व्यस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, नो हेल्थ एजुकेशन का मॉडल चुनना है, या हमें अभी से एक विजन रोड मैप बना के बिहार को $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देखना है और उसको चलना है। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद अभी आपको सोचना है, आपको जानना है कि क्या बिहार को इथियोपिया बनाना है या साउथ कोरिया जैसा एक डेवलप्ड कंट्री तैयार करना है। यहाँ सेंटर ने बिहार के साथ बड़े सौतेला व्यवहार शुरू से किया हुआ है। Funds given by center has been abysmally low since independence. Compared to Punjab and other states, the funds given to Bihar and Uttar Pradesh were way lower. Center has consistently exploited Bihar and has always given lower package than it deserved. But without going too much in history, let's focus on last 15 years. Do you remember when Modi announced 1.65 lakh crore package for Bihar? And can anyone tell me where is it? Double engine Sarkar? What happened to that double engine Sarkar in last 15 years? Corruption and nepotism is at its peak in jobs. Industries are getting wiped out. Sick and poor are dying without access to any healthcare. Hunger and dacoity is the main industry now. Liquor mafia is thriving and serving its political interests. Our brothers are forced to move out and look for jobs outside the state and go through terrible labor and physical pain to earn daily wages and feed their families. They see their families suffering. Whether their families are staying with them outside the state or are still inside the state, they have to feed them through tremendous physical pain. And our government isn't even bothered. We know all of that, so that's why we are here, to discuss what should be done. We will go into that. But first remember, why are we here? We are here to discuss Bihar vision and what's the best alternative. So to accomplish that, all efforts should be honest. There is no scope for complacency, corruption, or dishonesty. Now friends, we are in capitalist economy world. We want well-rounded development of our kids, our villages, cities, state and even country. To achieve that, try to understand this economic concept. GDP versus PPP, purchasing power parity. We have advantage of numbers, we have strength of people. We have 10 crore Biharis. We can create smartest economy of our country.
And to use this strength, we need to invoke the cycle of development, the ultimate cycle. And I call it the virtuous cycle of development. We have to kickstart employment through roads, infrastructure, dams, electricity. State has to start funding it. Simultaneously, we need to invest and make our education system one of the best in the country. Strict implementation and full employment of all temporary teachers. This will start what we know as knowledge economy. Employment will generate demand for goods and services, which will lead to more employment. Better demand will lead to improved quality, what we call export quality. And we will start exporting goods and services. More investment and private players will be drawn to enter our state. It will lead to more employment, which will lead to education quality improving even further. The demand will increase even more. The quality of goods services will increase. So on. Soon we will see GDP starts increasing. The wheel of development starts turning like a shock chakra, 24/7. And believe me, within 2 to 3 years, with concerted and honest all round effort, you will start seeing the growth in 2 years. How does it feel to imagine the virtuous cycle of development turning in Bihar? The wheel of development turning in Bihar like a shock chakra 24/7. Bihar on a growth track, on a journey that can make it a developed economy like South Korea in next 5 to 10 years. A $2 trillion economy vision. There will be jobs, quality education, teachers. There won't be any protests for joblessness. We will be exporting goods of high quality. Bihar once again will become knowledge hub of India. How does it feel? Feels pretty good, right? In part 2, we will discuss on how to achieve it. Until then, have a good time and blast.